warm welcome to all the participants. Good So morning, we will sir. be starting with the remaining portion of we were doing certain examples on income approach method. So we will start where we have left yesterday. This is another example. Under a private lease, under a private lease, 1500 square meter of land was leased in 1970 for a period of 70 years. So lease period was 70 years with lease rent of 4,000 per year. Lessee constructed a residential building and rented out tenements to tenants which yielded rupees 50,000 per year. Calculate the value of lessor's interest and lessee's interest in the property as on year 2015. So there is a lease condition that on maturity of lease, building with the less west with the lesser free of cost, rent control act is applicable to the tenants in the building but not to the lessee. So you have to do the valuation in the hands of lessee as well as lessor. First thing, the lease period was 70 years. The lease was done in the year 1970. And we are doing valuation in the year 2015. Means already 45 years have elapsed. So unexpired lease period is 25 years. Yes, sir. This is important thing. So whenever you have to do any question, you have to find, first thing you have to find it, what is unexpired period of lease? That is important thing. Then you will, first of all, let us suppose we are doing valuation of for the in the hands of lessor. So you will check what are the rights of the lessor. What are the rights of the lessor? First right of the lessor is he has a right to receive rupees 4,000 per year for 25 years. This is the first right. For 25 years, he has the right to receive rupees 4,000, which is lease rent. Okay. So we will capitalize this 4,000 for 25 years. Since this period is 25 years, it is less than 50 years. So which YP you will be using here? Sir, single rate YP. So YP, we will be using YP single rate. YP single. Okay. So we will capitalize this 4,000 for 25 years. Let us suppose at 8% for 25 years. In question, it will be given to you. We assume it to be 8%. So you find YP single rate, you know it is equals to 1 upon R into 1 minus PV, and PV is 1 over 1 plus R raised to power n. So you put all the values, you get YP as 10.675, and you calculate the value in 2015 for 4,000 rent. That comes out to be 42,700. Then what are the other rights the lessor have?
What are the other rights the lessor have? Sir, sir, that is the present value of that rented out building for 25 years, whose present value will be calculated on 2050. Sir, after 2015, what will be the rights of the lessor? Up to 2015, हमने जो 4,000 ले रहा था उसकी वैल्यू निकाल ली Yes, sir. for 25 years. Then after 25 years, what will happen? Building will be wasted with the lessor. Yes, sir. Building will 50,000. be listed with the lessor. And then, what are his rights now? Sir, he will be getting a start rent of 50,000 per year. Okay. So he will be getting 50,000 as rent. For perpetuity. So after 25 years, he will be getting 50,000 per annum in perpetuity. Because Rent Act is applicable. He cannot eject the tenants, but he has the right to get 50,000 as rent. So when you are doing valuation, first thing you have to find for what rights you are doing the valuation. This is most important thing. So after 25 years, he has the right to get 50,000 as rent in perpetuity. And we will be applying perpetual formula 50,000 into 100 upon 8 rupees 6,25,000 is the value after 25 years. But you have to find the present value. So you have to find the present value of this 6,25,000 will be 25 years after. So we have to find present value. You will defer this value. This is called finding of present value is also called deferring. This process is also called deferring. To defer this value. So present value is 1 over 1 plus r raised to power n. We defer it as 7% for 25 years. Present value factor is 0.1842. You multiply it with 6,25,000. So this is a value which he get in the form of rent after 25 years. So you are get the present value. You add both a 42,700 and 1,15,125. So this will be the total value in the hands of lessor. Now, what are the rights of the lessee when you have to do valuation of the lessee? What are his rights? Sir, to receive Think over 50,000 sinking fund. rent. His right is to get rupees 50,000 per year rent. For how many years? 25. 25 years. 25 years. So after 25 years, what will happen? It will back to the owner. Owner, he will not have anything. Yes. Building will Sinking go fund. back to the owner and the rent will cease. So we will be applying YP dual rate. So how much rent he will be getting actually? He is getting 50,000 as rent, but he is also paying 4,000. So basically net rent he is receiving is 50,000 minus 4,000, 46,000. So we have to take net rent. One thing you have to remember. So 46,000 will be capitalized. Let us capitalize it using YP dual rate. And is 25 year. Let us suppose rate of interest for capital is 8% and cumulative rate is 4%. You put all the values YP dual rate, you know it is equals to 1 upon R plus IC. IC, you know it is 1 upon S, means capital R over 1 plus R raised to power n minus 1. You put all the value IC is 0.024. You calculate the value
It is 4,42,000. So this is important things. You have to find the value of the right, basically. Sir, can you please repeat lesser's interest? Lessee's interest. Manji, what is a lessee's interest? See in the question. Read the question carefully. To get rent 50,000 per year for 25 years. For 25 years. This is the right of the lessee. And out of this 50,000, he has to pay 4,000 per year. Basically, he has the right to see 46,000 net rent. Clear? Any doubt? And sir, this 8% is assumed or what? Yes, it is assumed. Otherwise, when you are doing question in examination, it will be given to you. No need to have any assumption. सर जो डिफर रेट लगाए 7% वो भी गिवन होगा. जी, everything will be given to you. This is just an example. Basically, maybe many times such type of question raises during your practical valuation. Okay, any doubt? Now, a person has leased his premises for 21 years for net rank of 3,500 per month to a company, and he is ready to accept less negotiated rent instead of market rent by accepting a premium of 1,40,585. Then what rent should be reserved rent in the lease? The expected rate of interest is 9.5% and the redemption rate is 3.5%. See here, we have to give market rent is 3,500. Lease period is 21 years. But he accepted a premium of 1,40,585. Now, when premium is paid, what is its effect? Rent will be reduced. Reduction in Rent will be reduced. So what you have to find? You have to find a reduced rent. Reserved rent or reduced rent. And basically, it is how much this 1,40,585 will reduce, make the reduction in the rent. That is you have to find, basically. So in this case, net rent is 42,000 per annum. If 3,500 is means at least he should get 42,000 per annum. So premium paid is 1,40,585. Remunerative rate is 9.5% and the cumulative rate is 3.5%. So we will calculate the annual equivalent of the premium. That how much rent will be the owner getting in, we can say, in terms of interest. If he deposit this 1,40,585 in the bank, how much amount in the form of interest he will be getting? That will be annual equivalent of the rent, we can say. That he is getting rent in the form of interest, which he is getting by depositing 1,40,585 in the bank. That is called annual equivalent, basically, in layman's language. Okay, so we calculate annual equivalent. Annual equivalent is annual reduction in the rent. You calculate that is equals to premium paid divided by years purchase. Formula वही है, same formula.
नेट इनकम इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ओवर ईयर्स परचेज। कोई चेंज नहीं है, वही होगा, इनकम ही होगी। ही विल बी गेटिंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। फॉर इनकम यू फार्मूला यू नो, इनकम इज इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन वाईपी। फार्मूला इज सेम, नथिंग न्यू हेयर। So you calculate premium paid is 1,40,585. You calculate YP dual rate because both the rates are given. It means you have to use YP dual rate. You calculate YP dual rate, it comes out to be 7.810. You so reduction in rent will be capitalized value divided by YP. So 18,000. So 18,000 will be annual equivalent. So he will be getting 18,000 in the form of, say, let us suppose in the form of interest. So 18,000, or we can say 1,500 per month. So negotiator rent, total rent 42,000 he will be getting. If 35,000 he is getting 18,000 in the form of annual equivalent. So he needs a rent of 24,000 per annum. We can say, or we can say 2,000 per month. So what So is by get 1,500 per month? 1,500? 1,500 into 12 is 18,000. 18,000 per month or 15,000, 18,000 per year. This is Oh, per annum. okay, okay, so Any doubt? सर ये प्रॉफिट रेंट और नेगोशिएटेड रेंट बताना एक बार। Sir, it means how much rent he should negotiate rent. We can say that it is basically rent which he has been getting in the form of interest if he deposit 1,40,885 in the bank. Just a layman's. He may use it anywhere. It is not essential that he will be depositing this amount in the bank. But what is the cost of that? That is 1,500 per month. So the remaining he will have to get, means 2,000 from the bank. Even 35,000 is the rent. 1,500 वाईपी is डबल getting and रेट 2,000 will be remaining. वाईपी डुअल रेट क्यों ले रहे हैं? Sir, he has given you. डुअल रेट Yes. क्यों ले रहे हैं आप बताइए? दिए दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए। दोनों रेट तो दिए हैं सर 21 साल बाद क्योंकि रेंट वो लीज टर्मिनेट हो जाएगी इसलिए डुअल वाईपी ले रहे हैं। 21 साल बाद रीट हो जाएगी। और उसने जो प्रीमियम लिया है, देखिए वो 1,40,585 जमा करवा रहा है, तो उससे उसको आ रहा है रेंट, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना? कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 18,000। अब 21 साल बाद कई बार लीज में ये होगा कि अगर प्रीमियम वापस करना है तो वो कैसे करेगा? 21 साल बाद उसने 1,40,585 वापस करना है तो कैसे करेगा? वो उससे इंटरेस्ट ले रहा है, उसको यूज नहीं किया उसने। प्रीमियम जो है वो रिटर्न भी करना होता है कई बार, अगर उसने लिखा है तो क्या करेगा कि वो जो अमाउंट होगी आपकी, ये वाला जो फैक्टर है, ये क्या करेगा? सर अगर रेंट में रिड्यूस हो रहा है तो फिर प्रीमियम वापस नहीं करना पड़ता है? सर रिड्यूस तो कर ही नहीं रहा मैडम। 2,000 रुपया वो रेंट दे रहा है, और 1,500 उसने जो 1,40,585 दिया था उसके फॉर्म में उसको रेंट इंटरेस्ट आ रहा है, तो रिड्यूस कहाँ हुआ? सर बट वाईपी डबल मैडम उसने डुअल क्या रेट किया, क्यों ले देखिए रहे हैं? उसके पास एक ऑप्शन Yes. थी कि वो 3,500 रुपया लेता। एक मिनट सर, एक मिनट पहले मैडम के बात, ठीक है। एक उसके ऑप्शन थी कि वो मार्केट रेंट लेता। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर रहा है कि 2,000 रुपया रेंट ले रहा है।
ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, प्लस उसको 1,40,585 रुपये उसको मिले प्रीमियम के तौर पे। उसने क्या किया, वो पगड़ी। पैसे उसने डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, लेट अस सपोज के बैंक में करवा दिए, तो उसको वहां से कितना इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, 1,500 रुपये पर एन। 300। तो टोटल कितना मिला, 95। 35। तो यहाँ भी कितना था। सर बट लेसी को तो मतलब रिलीफ मिल गया ना, वो तो 2,000 लेसी ही को दिया है। रिलीफ नहीं मिली, लेसी को क्या रिलीफ मिली, लेसी ने तो 1,40,585 दे दिए। अगर तो लेसी यही पैसा बैंक में जमा करवाता, 1,500 उसको बैंक से आते, वो 2,000 अपने पास से डाल के जहाँ दे देता। सर एक बार किसको रिलीफ। पिछली स्लाइड करना। हाँ जी। तो इसमें जो ये, चाहे लेसी जमा करवाता चाहे लेसर जमा करवाता, और दोनों को पैसे तो 1,500 रुपये मिलने थे मैडम। यस सर। रिलीफ किसको मिला। सर इसमें नेट रैक रेंट तो 3500 लिखा है, जो आप हाँ 10,000 बता रहे थे उसकी साइड। जी जी, 3500 ही कर रहे हैं हम भी तो। लेसर इज मोर बेनिफिटेड। इसमें कोई बेनिफिशियल, वो लेसर जो है, हम ये यूज कर रहे हैं कि वो पैसा बैंक में जमा करवाएगा, वो कहीं भी किसी बिजनेस में लगाएगा तो उसको 1,500 रुपये से ज्यादा ही मिलेगा। हम्म। बेसिक सर मतलब बेसिक फंडा ये है। सर मतलब जो उसको प्रीमियम आया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी इंटरेस्ट की कैपिटलाइज वैल्यू ले ले रहे हैं हम। जी 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 जी, वही है बेसिक। अच्छा। बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसको तो ज्यादा ही मिलेगा। 1,40,585, अगर वो बैंक में नहीं कहीं प्राइवेट फाइनेंस करता तो उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एक क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जी जी। प्रीमियम सर किसके वो पास अल्टीमेटली रहेगा? प्रीमियम 21 साल तक लेसर के पास रहेगा, उसके बाद वो वापस कर देगा लेसी। जी अंसारी। सर वो फैक्ट्री वाला जो प्रीमियम है, और ये अलग अलग केसेस है ना। सर वो इनिशियल प्रीमियम था, वो उसने पेमेंट ही कर दी। सिर्फ फैक्ट्री वाला एमआईडीसी के ने सिर्फ एक तरह से प्रॉपर्टी को बेच ही दिया है, उसको एक ओके। तरह से ये समझ लो, लेकिन अपना उन्होंने मालकाना हक रखने के लिए 1 रुपया पर ईयर रेंट रखा है, जस्ट टू हैव देयर अथॉरिटी इन द प्रॉपर्टी। ओके सर। बेचा नहीं, इट्स और अ सर एक बार लॉन्ग टर्म लास्ट लीज। दैट वाज एग्जांपल, इनिशियल। जी। सर एक बार लास्ट एग्जांपल में बताएंगे सर वो डुअल रेट क्यों लगाया है इससे पहले वाले में? किसमें। इसमें सर, हाँ। हाँ, इसमें डुअल रेट क्यों लगाया है कि उसके पास क्या होगा, लेसी के पास क्या होगा, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द लेसी। Lessee just will take 46,000 rent for next 25 years. तो आफ्टर 25 years व्हाट विल हैपन। He will give back the building to lessor. सो हाउ मच रेंट ही विल बी गेटिंग आफ्टर 25 years। Zero. Zero. So that's why we have applied YP dual rate, so that he is able to get this much amount after 25 years as sinking fund. Okay. ठीक है। Any ठीक। doubt? सर तो फिर जो रेसिडुअल वैल्यू है, दैट इज द 1/r। Sir, that is not what 1/r. What is it is not residual value. It is 1/r is YP perpetual. कहाँ पे है रेजिड्यूल वैल्यू 1/r? 1/r is it is not any residual value. It is YP dual rate. Sorry, YP perpetual. पर सर जो फार्मूले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, को दिमाग में बिठाइए। अगर फार्मूले आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर एक बार फर्स्ट एग्जांपल दिखा दीजिए दोबारा, कौन सी। इससे पहले वाला, इंडस्ट्री वाला।
ये जो फर्स्ट में कल किया था से पहले सर, मैं तो आज फर्स्ट क्लास है। हाँ। ये वाला वो MIDC वाला। MIDC वाला देखना। हाँ, प्राइवेट लीज 1500। प्राइवेट लीज वाला पहले 1 मिनट ऐसे ना करो, पहले MIDC वाला देखना, वो देख लो जिन्होंने देखना है, ये है। नहीं ये नहीं, वो लॉन्ग टर्म लीज है, नॉट सेल। हाँ जी, ये 99 ईयर्स की एक तरह से जो अगर 50 ईयर्स से ऊपर है, परपेचुअल लीज है, तो इट इज एज गुड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 99 ईयर और 999 ईयर, इट इज परपेचुअल एंड इट इज एज गुड as freehold property. And here he has the right to sell the property. See here. In the present question, he does not have any right to sell the property. जी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? और सेकंड जो हमने आज किया था, जी देखिए। लेसर तो सर क्लियर है, इसके आगे लेसी में। जी क्लियर है, कोई डाउट? Sir, in this question, why they choose 25 years, sir? Like, is it mentioned like it सर should सी be हियर, इट इज लीज पीरियड इज 70 years, sir? Yes, sir. व्हेन द लीज वाज डन। 1970 minus 2015 is 45 years, sir. The remaining is 25 years. So unexpired lease period, this is you have to take. Fine with it, sir. Okay. And total lease period, you total period lease period is 70 years, but we have to consider only the unexpired lease period. Fine with it. Okay. Thank you, sir. सर सर इसमें कहीं लिखा हुआ है कि 25 साल ही इसकी लीज की एक्सपायरी है। सर 25 से लिखा नहीं हुआ कितने साल तक चलना था ये लीज पीरियड, कितने साल तक चलना था? 70 साल तक। 45 साल तो पहले ही बीत चुके हैं, 2015 में वैल्यूएशन कर रहे हो। 1970 से लेके 2015 तक कितने साल हो गए? 45। तो बाकी कितना बचा? हमने बाकी वाला पोर्शन लेना है सर। अक्षय जी, अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड कितना है वो बताइए। 25 years, sir. वही ले रहे हैं सर। एनी अदर डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर जाना। कौन सा सर? ये ये वाला? हाँ जी सर। सर जी इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे रेंट 3500 पर मंथ जो है उनका फिक्स हो गया। मार्केट का रेंट था सर, मार्केट का। अच्छा, मार्केट का रेंट। फिक्स नहीं था सर, रैक रेंट इज, कल आपको सारे रेंट करवाए थे। जी 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 जी। तो रैक रेंट इज बेसिकली मार्केट रेंट। मार्केट का जो रेंट है वो 3500। उसने 3500 लेने की बजाय 1,40,585 ले ली। तो अब वो कितना रेंट लेगा वो निकालना है। क्लियर है सर? कोई डाउट? Rack rent is market rent, no? जी जी। Okay. एनी अदर डाउट? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सर मतलब इसमें पेड प्रीमियम की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो सर होती रिडक्शन इन नेट इनटू वाईपी, और जस्ट उसका उल्टा करके हमने रिडक्शन इन नेट रेंट लिखा। और जी जी, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है। जो जी प्रीमियम है वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, 1,40,000। इसको हमने ज्यूम कर लिया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हमने एक तरह से देखिए, ये फार्मूला क्या है, एक यस, ये जो आपका इनकम का फार्मूला किसके बराबर होता है? इनकम का फार्मूला किसके बराबर है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय वाईपी और वाईपी। आर मिलन से, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने नेट इनकम निकालनी है कि ये जो 1,40,585 है, इसकी एक नेट इनकम कितनी होगी, उसको हमने वाईपी से डिवाइड कर दी। वही फार्मूला लगाया यहाँ पे सर। ओके सर। क्लियर, क्लियर है सर? कुछ भी नया नहीं किया जी सर। सर। सर एक बार 70 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। 17 नंबर स्लाइड कौन सी है? ये वाली ये वाली? जी जी। जी। ठीक है सर, थैंक यू। Excuse me, sir. Sorry for interruption. Small correction in MIDC for problem. जी Here unearned increase is 1,800 into 5,000 minus 400. Instead of 400, it's 460. ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, देन now we'll be doing a question on standard rent. Standard rent, you know what is standard rent? Sir, rent fixed by the court for in the Rent Control Act. So standard rent is a rent which is fixed by the court. Every state has its own rent control act, and based upon it, they fix the rent of a particular property. What they do basically, they appoint an engineer, and that engineer, what he do, he calculate the value of the land and he calculate the value of the building as in the as we are doing in the cost approach. Then he will court has given that on the land value so much percent return will be expected, and on the building so much percent, maybe 6% in the land value and 9% in the building value generally is taken as standard rent. 6% or 9%, whatever the percentage is fixed by the court, that percentage is applied on the cost of land and on the cost of the building. एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, when you calculate the value, you which rent you calculate, capitalized value is calculated on the basis of net rent. Capitalized value is calculated in the basis of net rent. But when you will be calculating the rent, you will be calculating gross rent, not the net rent. Whenever in a question you have to find out the net rent, if data is given to you, you have to find gross rent, not the net rent. See this question, this will clear all the things to you. A new constructed house standing on a plot costing rupees 60 lakh. The construction cost of the building is 20 lakh and estimated life of the building is 66 years. The investor desires to have 8% return on the construction cost and 5% cost on the light. Means generally it is percentage which is given by the code, means 8% return on the construction cost and 5% return on the land cost.
Assuming annual repairs to be 1% of the cost of construction and other outgoings are 30% of gross rent. Calculate the annual rent that will be charged for the building. The annual installment of sinking fund for life of 66 year of the building at 3% may be taken as rupees 0.005. So Friends, I basically request this, everyone, yes, sir. Friends, I request everyone to please take a piece of paper, pen, and calculator. Try to note down the data given in the question and try to solve as in continuity with the राजविंदर सर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसी वक्त पूछिए. देखिए, मेरा एक सजेशन आपको, सिंसियर सजेशन ये रहेगा, केस स्टडी कभी भी आपको देखकर नहीं आने वाली. अगर आप सोचेंगे देखकर मैं कर रहा हूं तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, एवरीथिंग इज ग्रीन. लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे, एवरीथिंग विल बी रेड. ये कैसे आया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. अगर आप सिंसियरली उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आना लाजमी है आपके माइंड में. अगर डिफिकल्टी आती है तो ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन. तो अगर आप सॉल्व अभी करना चाहेंगे, अभी कर सकते हैं, और आपको जहां पर लगे डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में ही होती रहेगी. अगर आप उसको रीड करेंगे, रीड करने में सब कुछ इजी लगेगा, अरे ऐसा ही होता है, ये तो मुझे आता है, 10 साल पहले किया था, ये तो मैंने मैट्रिक में किया था, 10th में किया था, कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर आप साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा डिफिकल्टी कहां पर है, आपके एजम्पशन में कहां पर गलती है. क्वेश्चन देखकर आप कोशिश करिए, गिवन डाटा नोट करिए, गिवन डाटा को थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए. देन यू विल फाइंड द एक्चुअल डिफिकल्टी वेयर इट इज. और अगर आप ये डिफिकल्टी इसी स्टेज पे आप क्लियर कर लेते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके टाइम भी बचेगा और आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा. यस सर, सॉरी टू इंटर. okay sir. So see here, first thing you see, he has given you sinking fund, annual sinking fund. Annual sinking fund means he has given you the value of, directly he has given you the value of IC. What is the value of IC? Half paisa per rupees. Half paisa per rupee. Why does this mean? Half paisa per rupees mean 1/200. 1 रुपये के लिए आपको हाफ पैसा देना है. Means 1/200 rupees. 1/200 means 0.005. This is IC which is directly given to you. You need not to find IC. Otherwise, you can find IC for 66 years at 33%. You will arrive at the same value. आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने IC आपको दे दिया 0.005. Next to see, what is the cost of land? 60 lakh. And how much return he want from the land? 5%. 5%. So annual cost required on land cost is 5% of 60 lakhs, means 60 lakh, 3 lakh per annum from the land he want. And how much he required from the building? 8% Nine. cost of construction. 8% from the, 8%. so 8% of what? 20 lakhs. 20 lakh means 20 1 lakh. Construction. Okay. Cost of Now, construction. this much amount he required for, means total income he required is 3 lakh plus 1,60,000, means he required net income as 4,60,000. This is net income he required. Now see here what he has given. Amount of annual repair. What is the amount of annual repair given? 1%. So 1%. 1% of what? Cost of construction. Construction cost. Cost of the construction. Cost means 1% of 20 lakh. This is 20,000 annual repairs. Okay. And what else is given? Other outgoings are 30%. 30% of what? Gross. Gross rent. Gross rent. Rent. So what is gross rent?
4 We x have to find. This is net rent, madam. So net income plus outgoings. Or we can Minus say outgoings. Sir, income without net outgoing. income is gross income minus outgoings. So let us suppose gross income is X. It is not given to us. यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है पहले। ठीक है, Hmm. 6,85,740. सर 2 मिनट रुकिए। See here, other outgoings are 30% of X. 30% of gross income means 0.3x. Okay, and annual sinking fund is includes उसने how much sinking fund he require. सिंकिंग फंड कितना चाहिए उसको, इसे देखकर बताइए। 0.005 0.005 0.005 of what? for the of 20 lakhs. Of 1 rupee. Building. Annual sinking fund is required. 0.005 of 20 lakh means 10,000. Okay, so net income will be equals to X is your gross income. 20,000 is net annual maintenance amount. 0.3x is other outgoings and 10,000 is your Sinking fund. so net income will be equals to 0.7 gross income minus 30,000. 0.7x minus 30,000. So this is your net income. Okay, net income is equal to gross income, which is X minus outgoings. Incoming voice call from Laddie. This is gross income minus outgoing. Gross income is X minus all the outgoings. So it is 0.7x minus 30,000. So but net income, you know, it is 44,60,000. दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से ग्रॉस इनकम आ गई आपकी, यू गेट ग्रॉस इनकम एज 7 lakh. This is 7 lakh per annum. So rent per month will be 7 lakh over 12, 58,333. Right. This is the rent per month. Sir, can you please repeat? Please go through. सर आवाज बंद होगी जी। फ्रेंड, सेम तरह की प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह की है और उसमें सिंकिंग फंड आपको कैलकुलेट करना है। मे बी सिंकिंग फंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हिज बैलेंस शीट, और कोई प्रॉपर्टी किसी लिक्विडेशन या किसी और पर्पस के लिए करनी है विद द सेम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको इन योर प्रैक्टिकल फील्ड यू मस्ट रिमेंबर द सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछिए।
व्हाट डू यू वांट टू आस्क? थिंकिंग फंड में हम 20 लाख इसलिए लिए क्योंकि वो बिल्डिंग की कॉस्ट है और वो इनकम जनरेट थिंकिंग फंड करेगी तो उसी के लिए ना, लैंड तो रहेगी ही मैडम, बिल्डिंग के लिए। एप्रिशिएट तो बिल्डिंग ही होगी। यस। एनी अदर डाउट? सर एनुअल रिपेयर्स का एडजस्टमेंट नहीं किया? सर किया है, क्यों नहीं किया? सर ये क्या है, ये क्या है 20,000? एनी अदर डाउट? Sir, is sinking fund used when the income is to terminate? Sir, actually I joined सर session around this matter. सर सिंकिंग फंड जो है वो इनकम टर्मिनेट करने के लिए नहीं होता है। सिंकिंग फंड का मेन फंक्शन ऑफ सिंकिंग फंड इज कि कल को अगर आपकी जो एसेट है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा तो उसको आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो एसेट है वो 60 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा, 66 ईयर, उसको आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए होता है सर। वहां पर भी जो था, इस क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन ये किया था, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, तो कि जो एसेट 4,42,000 का था उसको आपने 25 ईयर्स में रिकंस्ट्रक्ट करना हो, दोबारा बनाना हो 25 साल के बाद, तो आपको कितने पैसे चाहिए? 4,42,000। वो कैसे आएंगे? वो जहां से आएंगे, 0.024 जो आप करवा रहे हैं, 10,614 रुपये पर मंथ जो हमने किया। सर मतलब पर मंथ उसको सेविंग करनी पड़ती ताकि एसेट की वैल्यू रीगेन हो सके, रिकंस्ट्रक्ट हो सके, रिकंस्ट्रक्ट हो सके, ठीक है। वही बात है ना। ओके। यहाँ पर भी वही बात, बेसिकली वो उसको नहीं देने हैं, लेसी को देने नहीं है, इस एसेट को जो डेप्रिशिएटेबल एसेट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है आफ्टर 25 ईयर्स। यहाँ पर भी इस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना है 66 ईयर्स के बाद, तभी हमने। क्लियर है सर? कोई डाउट? जी सर, जी सर। सर इक्वेशन एक बार समझा दीजिए। सर नेट इनकम किस चीज के बराबर होती है? ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। ओके, यस। ग्रॉस इनकम कितनी है? एक्स हमने मानी, हमें नहीं पता। उसमें से आउटगोइंग कौन कौन से है? एक 20,000 है आपका, जो यस। आपका एनुअल रिपेयर है। उसके बाद एक आपका 0.3x है जो अदर आउटगोइंग्स है, और एक आपका 10,000 है सिंकिंग फंड। ये आपके आउटगोइंग्स है साल के, यही है। ओके। यस यस। तो x माइनस 0.3x इज 0.7x, 0.7। -20 -10 इज -30,000। गॉट ओके, इट। बट नेट इनकम इज 4,60,000। क्लियर है? एनी डाउट? यस सर, क्लियर। So next thing we have done, discount cash flow method. The next questions will be based upon discount cash flow. Friends, as a valuer, you might get some assignment to find the NPV, net present value, on the basis of discounted cash flow. Then, in many metro cities and even developing cities like ours, a small city, there are many MNCs who are going to invest in certain projects for their benefits and for their purposes of business. They might approach you. They may approach you for finding out the best option and find the net present value of their investment. As a valuer, you must know how to calculate this. It is a very, very rich source of generating revenue as a valuer. Yes, sir. Here, you have to find the net present value of the project having a following data and advise the client. See, it is given cost of purchase is 2 crore. Then for here is basically
this is a project, and the investor comes to you and he gives you the following data, and he asks you whether this project will be viable or not. Okay, he said told that he will purchase a land for the project that will cost him 2 crore. Then he will construct a building over it that will cost him 1 crore 50 lakh. Then he will be getting rent from that building which he has constructed rupees 30 lakh per annum consecutively for 5 years. Every year he will be getting a rent of 30 lakh per year. Okay. And after 5 years, he will sell this property for 5 crore. Building plus land he will sell. He is expected that it will be sold at a cost of rupees 5 crore after 5 years. And when he sell his property, then he will have to pay capital gain tax. You know, capital gain tax is paid when there is gain in the while selling the property, that will be 60 lakh. He wish to have 12% target rate of return. He wants 12% return from this project. Otherwise, from the bank, you deposit this 3 crore 50 lakh, he will be getting an interest of 6 to 7%. That is why he is investing in the project. And he wants you to check whether he will be able to achieve this target of 12%. So basically, his aim is to check whether he will be able to achieve this target of 12%. यहाँ पर क्वेश्चन अगर किसी को समझ नहीं लगा तो पूछिए. Anyone who is unable to follow the question what he is asking. Anyone, अगर क्वेश्चन आपको समझ लगा तभी आंसर की तरफ हम बढ़ सकते हैं. You are not able to follow the question what is required to be calculated, then it will be very difficult to find the answer. Sir, what is the improvement? Improvement means construction of building. Any improvement done on the land. It may be construction of building, or if the building was there, then improving its present condition. Sir, जो purchase cost of जो purchase है that is land. जी जी. और मे भी होता project. It may be cost of purchase, maybe of land, or it may be cost of the project which is already a building, and then making improvement in the building will cost him 1,50,000. We can say that does not matter. The target rate is normal R, right? Target rate is 12% he wanted. Otherwise, if he deposit this much amount, he will be getting 6 to 7% return from the bank. That Okay. कल हमने पढ़ा था CAPM कि जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतने ही ज्यादा उसको रिटर्न मिलेगी, तो वो 12% रिटर्न लेना चाहता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो what this net present value will indicate? We will check if net present value is greater than 0, he will be able to achieve more than 12%. देखिए कभी कभी आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ यू वांट टू अचीव द टारगेटेड इनकम. It should be greater than 0. Okay, if net present value is equals to 0, it means at least 12% return will be achieved. And if net present value is less than 0, means this project is not viable. No, he will not be able to achieve a target of 12%. Clear? See here how we will proceed. We will do this question in a tabular form so that all the things are clear to you. Otherwise, you may use an equation which we will using in the next question. Here we will be doing calculation in a tabular form to make the things clear. Let us see. See, on one side we will be taking
cash in, on other side we will be taking cash out. So at the start, सर ये अभी पढ़ देख लिए, 2 मिनट होल्ड करिए, सारा क्लियर हो जाएगा. एट द स्टार्ट, व्हाट इज द परचेज प्राइस ही पेड? ऊपर 2 करोड़. करोड़। हमने आज की डेट में सारा कुछ कैलकुलेट करना, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 2 करोड़ ही है. ठीक है. आज की डेट में वो कह रहा है कि मेरे 1.5 करोड़ रुपया खर्च आएगा इम्प्रूवमेंट, वो 1.5 करोड़ हो. ठीक. और आज आज और रेंट कब आना शुरू होगा उसको? फर्स्ट ईयर. सर फर्स्ट ईयर। एक साल From के the बाद. first year. एट द मतलब वी विल अज्यूम दैट एक साल के अंदर आना है. हमने टोटल ये अज्यूम करेंगे, एक साल बाद उसको 30 लाख मिले. अब उस 30 लाख की वैल्यू आज की डेट में कितनी है? सर 26,78,577। ठीक है ना, उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया. Second, at the end of second year, he will be getting again 30 lakh, and its present value factor will be 0.797. You can calculate it. Formula is 1 over 1 plus r raised to power n. In here, n will be 1, here n will be 2. 2. So its value is 23,91,000. At the end of third year, he will be getting again 30 lakh. Present value factor is 0.711, and value will be 21,35,000. Similarly, in the fourth year, present value is this. In the fifth year, present value is this. Okay, clear है यहाँ तक? Any doubt? Then, after 5 years, what will happen? He will sell the property for 5 crores. 5 CR. 5 crore. Okay. So present value to factor, it will remain 0.567 after 5 years. So he will get a cash price, cash value as on today. It's 5 crore value as on today is 2 crore 83 lakh. And again, he has to pay his capital gain tax of 60 lakh. Its present value is 34 lakh 4,000. So these are the cash out. 2 crore he has to spend, 1 crore 50 lakh he has to spend, and 34 lakh he has to spend. So total he have to spend an amount of 3 crore 84 lakh something. And total earning will be, 3 you lakh. take sum of all these, 3 crore 91 lakh. See here, cash in is more than cash out. We are discounting it at 12%. 1 over 1 plus r raised to power n means 1 over 1 plus r is 0.12 raised to power. In the first year, it will be 1. In the second year, 2, 3, 4, and 5. So we will be discounting is because 12% is target rate. So you calculate, see here, वो present value at कौन सा present होगा? value, total cash in minus total cash out means 7,81,110. This is greater than 0. It is positive. So it means the Viable. project is viable. तो कैश आउट का टोटल 34 lakhs कहाँ से लिया था वो? सर कैश आउट का टोटल 3 करोड़ 84 लाख है सर. ये है कैश आउट. उसके ये सर कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया 60 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू. ओके. सर हाउ टू फाइंड कैपिटल गेन टैक्स? सर वो हम करेंगे, अभी आएगा. विल बी डूइंग ऑल कैपिटल गेन्स स्टडीज इन केस स्टडीज. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 60 lakhs. दिस इज गिवन. 60 लाख तो 5 लाख 5 साल के बाद में देना है ना तो कैपिटल उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही निकाली है सर. ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज की डेट में उसकी वैल्यू 34 लाख आ गई.
तो इसको जी क्लियर है डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, आई मीन हाँ जी इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 1/1+0.12 and to the power 5, अगर 5 ईयर का वही कर। निकाला है मैडम, ये फैक्ट्री निकाला हुआ है, वहीं से निकला है 1/1+0.12 रेज टू सर पावर मतलब 5। वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, मैं ये बोल रही वो डायरेक्ट आप वहां पे एक्सेल में पुट करके निकालो, डायरेक्ट नहीं निकालो। हूँ। यस। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको उस वक्त देनी होती है जिस वक्त क्लाइंट आपके ऑफिस में बैठा है, एज ऑन डेट उसके एजम्पशंस लेकर, अगर हो सकता है रेंट उसको ना पता हो, तभी वो आपकी सर्विसेज लेगा। मींस यू हैव टू कैलकुलेट द रेंट एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड एज पर एप्लीकेबल रेट, प्रिवेलिंग रेट विच आर इन दैट एरिया, एज पर योर assumptions, मींस एज पर वैल्यूअर्स इनपुट। आपको अपने एरिया के या उस पर्टिकुलर एरिया के रेंटल वैल्यू पता होनी चाहिए। वो आपको बोलेगा इतना स्क्वायर फुट मैंने बनाना है, इतना स्क्वायर फुट की बिल्डिंग मैंने ली है, एक अनकंप्लीट बिल्डिंग है या फिर टू बी डिमोलिश बिल्डिंग है, या पुरानी बिल्डिंग है 2 करोड़ का मैंने 12%। लिया है, या फिर ओपन लैंड है उसमें मैं 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करूंगा। वेदर वो रिपेयर रेनोवेशन में हो सकता है, उसका मॉडिफिकेशन में हो सकता है, उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करने के लिए हो सकता है, वट एवर इट इज। उसके बाद जितना स्क्वायर फुट बनेगा उसका कितना प्रपोज रेंट होगा, वो एज अ वैल्यूअर हो सकता है वो आपकी सर्विसेज ले, तभी वो आपके पास आएगा। नहीं तो ये टोटल तो वो अपने कैलकुलेटर में भी कर लेगा। तो आपके पास जब आएगा तो आपसे एक्सपर्ट एडवाइस लेने चाहेगा, आपकी सर्विसेज लेना चाहेगा, तो आपको इसके लिए एक्यूप होना पड़ेगा एज अ वैल्यूअर। अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, अभी लैंड एंड बिल्डिंग से बाहर आ जाइए, लैंड की वैल्यू निकालिए, बिल्डिंग की वैल्यू निकालिए, टोटल कर दीजिए वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन नहीं है तो एक रिक्शे वाला भी कर लेता है, एक पान की दुकान वाला आपसे ज्यादा वैल्यू जानता है। एज अ एक्सपर्ट आपको ये चीजें अभी करनी पड़ेंगी और ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी एज अ वैल्यूअर, अगर आपको सर्वाइव करना है इस सिनेरियो में। अगर आपको सर्वाइव करना है, फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवर। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी एज अ वैल्यूअर, वेदर यू आर अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन और यू नीड टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। टाइम बहुत ज्यादा फास्टली चेंज हो रहा है। अभी लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू भूल जाइए। वो एक बच्चा भी 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, एक अनपढ़ गंवार आदमी भी कर लेता है। एक प्रॉपर्टी डीलर आपसे ज्यादा वैल्यू लगा सकता है। तो आपके पास क्यों आएगा वो? क्यों आएगा? क्यों फीस देगा? हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी 3,000 फीस है, हमारी 2,000 फीस है, फीस नहीं मिलती है। क्यों फीस मिलेगी आपको? क्यों देगा वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। बैंकर को खुद पता है वहां पर क्या वैल्यू है, लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू। जब तक आप उनको ये चीजें नहीं देंगे, हर आदमी प्लस मांगता है। अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी मलाई अगर डाल के देंगे तो उसको स्वाद लगेगी, तभी वो आपके पास आएगा। कुल्हड़ में चाय देंगे तभी वो कुल्हड़ में चाय पीने आएगा, नहीं तो चाय तो उसको टपरी पे भी मिलती है 2 रुपए की, आपसे वो 20 रुपए की क्यों खरीदेगा? तो थोड़ा सा आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी अपने प्रोफेशन के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप फीस ले पाएंगे, तभी आपकी मर्जी की फीस मिलेगी। एंड आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, टाइम बहुत चेंज हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करते हैं, इट इज मीन्स ट्रिमेंडस, आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सकता है एज अ वैल्यू। यस सर, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। So in this question we have done the question in a tabular form. Now we will be doing by directly applying the question. Directly apply the formula. See here that initial cost of two projects A and B is same 3 crore, and their net annual income rate return pattern for 3 years is as follows. The project A will be getting 2 crore, 4 crore and 5 crore in 3 years, and this project B will be 3 crore, 1 crore and 4 crore. Okay. So which if the target rate is 14%, find the ranking of the two project. तो ये तो एक स्मॉल डाटा है, इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है, क्योंकि 11 करोड़ आ रहा है, इसमें 8 करोड़ आ रहा है वैसे। पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डाटा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे आपने प्रोसीड करना है? फार्मूला इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, फार्मूला इज G1 इज फर्स्ट ईयर्स इनकम divided by 1 plus R raised to power 1. G2 is second year's income. G3 is third year's income divided by 1 plus RQ. Minus C is initial outlay. Initial outlay or initial cost of the project. This is the formula. देखिए, So here, एक यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट। एक कस्टमर आपके पास आता है या एक एमएनसी आपको अप्रोच करती है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है आपके सिटी में या आपके सिटी के आसपास। मेरे पास 2 अलग अलग साइट्स हैं, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए के लिए मुझे फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ है
देन सेकेंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, उसकी प्रोजेक्टेड एनुअल प्रोजेक्टेड रिटर्न वो आपको बता रहा है, प्रोजेक्ट बी में इतना बता रहा है। तो दोनों में से मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आपको कभी कभी किसी क्लाइंट का आपको अप्रोच कर सकता है। तो आपको एज अ वैल्यूअर यू शुड बी एक्यूब, तो कि आपको कैसे देना है और उसको फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर कोई चैलेंज करे तो आप उसको क्या जवाब दे पाएंगे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Okay. So net present formula in see here. In the first year, it is 2 crore divided by 14% means 1 plus 0.414 raised to power 1, 4 crore, 5 crore. You put all the values minus 3 crore, which is initial investment. So net present value will come out to be 5 crore 20 lakh 96,874. Similarly, for the project B, first year income is 3 crore. You defer it with 14%. Second year income 1 crore, defer it at 14%. Third year income 4 crore, defer it as 3%, 14%. So total minus 3 crore is your initial investment. So your net present value is 3 lakh crore 10 lakh, and in this case it is 5 crore 20 lakh. So naturally project A will be more viable than project B. हो सकता है यहाँ पर आपको तीनों सालों की रिटर्न जो है ये आपका ड्यूटी वो लगा दे कि आप कैलकुलेट करिए। लेट इट बी, एक जालंधर में प्रोजेक्ट है, एक अमृतसर में प्रोजेक्ट है, एक जालंधर हाईवे पर है, एक दिल्ली हाईवे पर है। तो दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? एक में 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, दोनों में 3-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर दिल्ली हाईवे पर करना चाहिए या फिर जम्मू हाईवे पर करना चाहिए? तो आपको वहां पर जाकर आपको पर ईयर रिटर्न आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज अ वैल्यू। दैट कम्स अंडर योर पेरिफेरी, योर सर्विसेज। आपके सर्विसेज के दायरे में ये आएगा कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से कितनी पर ईयर जनरेट होनी चाहिए, कितनी वहां पर वैकेंसी रह सकती है, ये सारा डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। कितनी वैकेंसीज रह सकती है, अगर रेंटल इनकम है या फिर उसकी दूसरे प्रोजेक्ट की इनकम है, तो कितना हमें पर ईयर वहां से उसका प्रॉपर्टी से रिटर्न मिल सकता है, और दूसरी प्रॉपर्टी पे कितना मिलेगा, वहां पर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये सब कुछ डिटेल करने के बाद ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है। इट इज टोटली स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये सारा टोटल करने के बाद आप उसको डाटा देंगे तो वो आपके ऊपर रिलाई करेगा, देन यू विल बी एबल टू जनरेट अ हायर फीस देन अ नॉर्मल वैल्यू। Clear? Any doubt? सर ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहेगा क्या हाँ जी, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, लाइक इस टाइप का कुछ? जी जी। सर सर ये बेसिकली कैपिटल मार्केट्स का प्रोजेक्ट होगा ना, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग करेंगे, और जो जी जी पुराने थे उसमें हम लोग उसका इंटरेस्ट बता रहे थे, लेसर और लेस बिल्कुल बिल्कुल, जी एग्जैक्टली जी। कैपिटल मार्केट्स। एग्जैक्टली। ठीक है सर, इनकम अप्रोच खत्म हो रही है, तो यस वी विल बी स्टार्टिंग मार्केट अप्रोच आफ्टर सर, आफ्टर शॉर्ट टी। कैन वी टेक अ 15 मिनट्स टी ब्रेक इफ जी यू जी आर? सर, जी सर। Yes. So friends, it is 10, sorry, 11:10 now. 11:10 है। We will join sharp at 11:30. 11:30 पे दोबारा जुड़ेंगे। Till then you can switch off your screens.